Hello and welcome everyone to this weekly edition of Market Review. And yes, this week has been extremely volatile, and the way the market has progressed, it has definitely given everyone goosebumps. जिस प्रकार से मार्केट ने ऊपर की तरफ खींचा, वहां से नीचे की तरफ खींचा, और जब सब लोग सोच रहे थे कि यहाँ से एक सपोर्ट टूट जाएगा, वहां से मार्केट दोबारा फिर गया। तो मार्केट का एंटायर मूवमेंट जो है काफी वोलेटाइल रहा है, और जिस प्रकार से हम मार्केट को देख रहे हैं, फिलहाल इट इज क्वाइट अ चैलेंजिंग सिनेरियो। लेकिन इस चैलेंजिंग सिनेरियो के बीच आपके साथ मैंने काफी इंपॉर्टेंट लेवल शेयर किए थे। आई एम श्योर जो भी मेरे वीडियो फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने जरूर नोट डाउन किया होगा और जरूर थोड़ी ट्रेडिंग में आपको मदद हुई होगी, राइट? एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आपने देखा ना हो, नो प्रॉब्लम, can still start now. And what you want to do is you just have to hit the subscribe button, and you also have to hit the bell icon so that you remain notified. आपको इस वीडियो के दौरान मैं थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा जो मैंने शेयर किया है, तो जरूर लाइक करना ना भूलिए, एंड ऑल्सो ensure that you comment on this video, because that really helps me and helps me stay motivated. All right, thank you so much, and let's get started with the weekly edition of this extremely volatile week. जब भी हम देख रहे हैं कि जो ओवरऑल पोजीशनिंग है, जो जिस प्रकार से ये आपको दिख रहा है कि द एंटायर मूवमेंट ऑफ द डेली सेक्टर, राइट, ये डेली सेक्टर का एक दृश्य आपके सामने है। और जिसे देखकर आपको पता चल रहा है कि यस, वापस एक हल्का फुल्का सा मूवमेंट था, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थी, एंड नथिंग टू राइट होम अबाउट, राइट? तो ये देखकर आपको क्लियरली पता चल रहा है कि द मार्केट इज इन अ रेंज बाउंड सिचुएशन। मार्केट को पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली करना क्या है। और ये जो सिचुएशन जो आप देख रहे हैं, दिस सिचुएशन इज बीन एग्जिस्टिंग फॉर last so many days, right? This situation has been existing for the last so many days, and what you got to see is not only it has been existing for the last so many days, it has been present in the last so many द एंटायर वीक। अगर आप देखेंगे कि पूरे वीक में, कि पूरे वीक में अगर आप देखेंगे कि दिस हैज बीन अ सिनेरियो, एंड व्हेन यू टेक अ लुक एट द ओवरऑल सेक्टर, व्हेन टेक अ लुक एट द ओवरऑल सेक्टर, तो हमने पहले देखा कि फ्राइडे को क्या हुआ था, बट अगर आप देखेंगे पूरे हफ्ते, द सिनेरियो हैज बीन सिमिलर। yes, there has been some positive traction seen in the metal names, right? और मीडिया में थोड़ी पॉजिटिविटी है, बट देन टेलीकॉम टेक्सटाइल्स हैव बीन लार्जली हिट, और उसके साथ देयर इज नथिंग मच ऑफ पॉजिटिव ट्रेंड्स व्हिच आर इमर्जिंग राइट नाउ। One interesting thing which I would like to say, though, which is not seen here, is that the IT sector, okay, the IT sector is showing some very good movement. Some IT sector is showing some very good movement. और अगर आप देखेंगे कि आईटी सेक्टर के साथ आपको काम करना हो, तो इट कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले फॉर द वीक अहेड। So definitely, IT sector is interesting, and on the IT sector, I'll be sharing with you some interesting insights in a separate video. Now, when you go and take a look at what has really happened, so वीकली सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वीकली में जो बड़े दिग्गज स्टॉक्स हैं, how have they done? If you take a look at that, again you will see here that in the entire week, okay, in the entire week, the IT stocks managed to hold on. Results अच्छे आए, and yes, TCS did well post the opening, but then उसके पहले, उसके बाद, और अब the entire market scenario is dependent now on IT. Will the IT bring back a positivity? Now, results के तौर पे ICICI Bank, HDFC Bank, what is going to happen, and what are the results telling us? इस रिजल्ट्स को देखकर क्या हम देख पाएंगे कि यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम आएगी? क्योंकि व्हेन यू टॉक अबाउट द आईटी, HCL Tech did well, Infi did well, TCS has done well, Wipro has managed to meet estimates. So overall, the big IT names have managed to at least put up a positive face. तो ये जो IT से जो ट्रिगर हो सकता है,
क्या हमें एक बुलिश मोमेंटम दोबारा नजर आ सकता है? इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, बट वी आल्सो नीड सम सपोर्ट फ्रॉम अदर सेक्टर्स। और अगर आप देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक का जो नतीजा है वो सैटरडे को होगा और उसका जो परिणाम है वो हमको मंडे देखने मिलेगा। बट अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल मूवमेंट जो हो रहा है यहाँ से क्लियर है कि द बैंकिंग इज स्टिल pushing, and the reason for that is that they are not convinced about the kind of momentum. But then overall, I feel that Bank Nifty somehow is managing to hold on. कुछ खास बात है और वो खास बात हमें नेक्स्ट वीक देखने मिलेगा। Till then, we got to maintain that yes, Bank Nifty somehow is not giving up. We got to see whether HDFC Bank, which has got a significant weightage, will it propel the Bank Nifty higher or will it bring it down? It's a very interesting question which we got to see in the days to come. Now, अगर आप देखेंगे कि अगर डेली पैमाने में yes, many stocks revived, and you can see here some of the stocks have been doing well consistently, and amongst them the FMCG basket, right? HUL seems to be doing quite well, and HUL has put out a very good play once again, and it has given a good performance. Yes, yesterday we saw some profit booking on Thursday, but then Friday it has come back strongly. So you can see here the IT names Infi, HUL, TCS, they all have done fairly well. Reliance continues to be range bound, so Reliance पर फिलहाल हम गौर नहीं करेंगे, बट जरूर बैंकिंग और आईटी में कुछ हलचल है, तो अगर आपको काम करना है तो एक ट्रेड जरूर उस उन दोनों सेक्टर में से एक सेक्टर में जरूर लीजिएगा। एंड राइट नाउ आईटी इज डेफिनेटली शोइंग सम वेरी गुड कलर। नाउ प्राइस एक्शन की तरफ आप चलेंगे, अगर आप प्राइस एक्शन की तरफ चलेंगे तो आप देख रहे हैं कि ओवरऑल प्राइस एक्शन जो है एक सीसॉ मूवमेंट चल रहा है। प्राइस एक्शन में आपको दिख रहा है यहाँ पे एक सीसॉ मूवमेंट चल रहा है, और इस सीसॉ मूवमेंट में काफी परेशानियां हो रही है। पीपल आर वंडरिंग यस, इज इट अ रैली टू सेल इनटू? पीपल आर वंडरिंग इज इट अ डिप बाय? So all sorts of permutation combinations are happening. But then if you note, I had mentioned that 17,800 to 900 will continue to remain an important support zone. Okay, that will continue to remain an important support zone. और उस support zone से जब भी एक उछाल आए, so you can take a low risk buy या wait for our famous approach, famous 30-minute approach। 30 मिनट वेट कीजिए और उसके बाद काम कीजिए। तो 30 मिनट अगर आप वेट करते और काम करते, यू गॉट अ वेरी डिसेंट रन एज फार एज द इंडेक्स ट्रेड इज कंसर्न, राइट? But now when you want to go and take a look and take some help from the big boys, right? The big boys are present in the FNO space, the derivative space, and especially in the option space. तो वो कह रहे हैं कि 17,900, right? Probably they are listening to my video as well. They are saying that okay, 7,900 यहाँ पर गला फाड़ फाड़ कर कह रहा हूँ, तो शायद वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जोन है। तो उस जोन पर काफी राइटिंग हो रही है, और ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि अभी एक 7,900, 7,800, so there are some put writing happening here, और ऊपर कोई खास कॉल नहीं है। तो मैं नेक्स्ट हफ्ते, ओके, कंसिडरिंग दैट यस द एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आएंगे, उस पर हम ध्यान देंगे, और उसे ध्यान देकर ओवरऑल सेटअप जो यहाँ पर बन रहा है एक पॉजिटिव माहौल की तरफ बन रहा है। एंड एवरी टाइम बिफोर एनी ट्रेंड इमर्जेस देयर इज ऑलवेज सम गायरेशन, देयर इज ऑलवेज सम वोलेटिलिटी। यूएस मार्केट्स में भी उतनी हलचल नहीं है, देयर इज सम कूल ऑफ पीरियड, एंड इन्फ्लेशन थोड़ी कम ही होने की वजह से मार्जिनली लेस, it has given room for the Federal Reserve to reduce the interest rates. That's what is the claim by all the people who are analyzing that macro data, right? Even our macro data came pretty well. So when all these factors are considered, okay, IIP का नंबर अच्छा आया है, तो इन्फ्लेशन भी थोड़ा बेटर होगा। That's what is the overall conditioning of the entire market. So उसे मद्देनजर रखते हुए हमें लग रहा है कि नेक्स्ट हफ्ते थोड़ी पॉजिटिविटी देखने मिलेगी। तो क्षेत्र में एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसके बारे में हम जरूर रोज चर्चा करते रहेंगे, बट ये देखकर लग रहा है कि पॉजिटिव वाइब्स इन निफ्टी इज इमर्जिंग। एंड यस, आज के दिन
ये एनालिसिस खत्म करते हुए मैं यही कहूंगा कि निफ्टी में एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है, उसे जरूर देखना चाहिए। एंड व्हेन यू टेक मोर हेल्प फ्रॉम द काइंड ऑफ चेंज दैट इज इमर्जिंग, राइट, लेट्स गो एंड डू आवर चेंज एक्सरसाइज। तो जब भी आप हमारा चेंज एक्सरसाइज पर आप ध्यान देंगे, तो यू कैन सी हियर दैट काइंड ऑफ writing which is happening on the call side, okay, kind of writing which is happening on the call side, yeah, it is much lesser, okay. There is some effort trying to contain the rise, yes, वो तो जरूर होगा, but यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी खासी पुट राइटिंग भी हो रही है, and it's seeming to be much more than the call writing. So this is giving me an indication that we are ending the week. Okay, volatility जरूर थी, but we are ending the week on a positive note with an outlook to go up. सब लोग को लग रहा था कि आईटी में बुक वाली दबाव हो सकती है, but that did not happen. That did not give fuel. Bank Nifty continue to hold on to 42,000. Nifty continue to hold on to 17,800, 900. तो उसका मतलब यही है कि बुलिश कैंप ने किसी भी तरह इस सपोर्ट्स को डिफेंड की है। तो नेक्स्ट वीक इट विल बी गेम ऑन फॉर द बेरिश कैंप while the bulls try to get back into their territory. So it's again going to be an interesting week, but then don't worry, I have your back, and we will see how the entire market is unfolding. क्योंकि the overall PCR is also nicely inching towards one, and well, we can definitely consider that yes, अगर पीसीआर अगर एक की तरफ चल रहा है तो मतलब थोड़ी सहूलियत मिल रही है टू द बुलिश कैंप, और उसे देखकर हम काम करेंगे आगे के दिनों में, एंड द ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स ऑफ निफ्टी गोइंग अप बी मच बेटर। नाउ हैविंग सेड दैट, ये सिर्फ एक प्रोस्पेक्ट है, इसे हमें और भी गौर से देखना पड़ेगा एज द डे अनफोल्ड्स ऑन मंडे। Now once again we come back to our famous channel, right? So थोड़ी चीजें जो हम रोज डिस्कस कर रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि ऊपर पर बिकवाली हो रही है और नीचे पर खरीदारी हो रही है। तो 42,500 इज एन इम्पोर्टेंट जोन टू वॉच आउट फॉर। वहां पर दोबारा एक कोशिश हुई है टू गो अप, बट इट हैज नॉट बीन सक्सेसफुल। सो नाउ बाय ऑन डिप सेल ऑन रैली इज वेरी एविडेंट हियर। सो यू नो दैट इफ दिस लेवल, मैंने आपको कल भी कहा था कि 42,500 का लेवल जो है, अगर उसके आगे चली जाए तो जरूर एक 500 पॉइंट की आप उम्मीद रख सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज अ सेटअप इंडिकेटिंग। एंड व्हेन यू गो एंड टेक अ लुक एट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द एंटायर वीक, okay, what happened during the entire week, was it really worth tracking the bank nifty? The answer is no. Why? Because it has spent the entire time in range, and you can see here none of the stocks have really moved anywhere. Okay, none of the stocks have really moved anywhere, barring IndusInd Bank, which has shown a good move. So now, considering which bank to track going into the coming week, none among the top uh, run banks are doing well. Instead, IndusInd Bank में एक अच्छी मूवमेंट है, और मैं रेकमेंड करूंगा कि IndusInd Bank में अगर कोई मूवमेंट दिख जाए on the in the coming week, it will be a very good follow through, और उस follow through को ट्रैक करके हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं मार्केट में on the upside. Now when you again go back and see what did it do on Friday. On Friday you can see nothing much. Everyone is waiting for HDFC Bank result. क्या वो बैंक निफ्टी को शॉक दे देगा और दोबारा 42,000 टेस्ट होगा? So it's a test of supply zone and demand zone. You got the supply zone at around 42,500, you got the demand zone at around 41,900, 42,000. So ये zones जो है ये दोबारा टेस्ट होगा next week, and we got to be tracking these levels and keep participating in this manner, so that you are always getting an opportunity and you are there when the action is happening. Now, when you take a look at the kind of movement which is being displayed by the OR data, it's very clear that 42,000 का जो floor था वो टूटा नहीं, and yes, it is trying to push the indices higher. Now, how far will it go and what will be the challenges? क्या ऑप्शन डेटा हमसे कुछ कह रहा है? You can see here
that what is a kind of action that is emerging, right? अभी हम दोबारा करेंगे हमारा change analysis. आप देखिएगा यहाँ पे कि see here that this is the kind of heading which is emerging on the call side. Comparatively, you can see here that the put writing is much more stronger. So यानी 42,000 को सपोर्ट करने के लिए काफी लोग खड़े हुए हैं. And on the upside, not much of call writing is happening. So which is a clear indication that yes, the bank nifty is showing a much more positive sign, and that is what we are looking at. So now, having said that, and also looking at the kind of momentum which is at work, okay, we have to also look at the kind of momentum which is at work. You can see here that the overall movement जो है, overall movement जो है, it is indicating that yes, TCR भी अच्छा पहुंच गया है towards one. So which is a clear sign that yes, the momentum is favoring the bullish camp now. एक last week the momentum was tilting towards the bearish camp. Now at the end of this week with some positive reaction, mild positive reaction to the Q3 numbers, and also the kind of response which you are getting from the overseas market, it looks like the Nifty is once again trying to revive from lower levels. Now, having said that, and the overall position, let's also go and take a look at the levels. और जब हम levels के बारे में बात करेंगे, let's get into Neo Trader to find out कि Neo Trader में क्या levels है और इस हफ्ते के लिए हम क्या संकेत देख रहे हैं और किस प्रकार का एक्टिविटी हम ट्रैक कर सकते हैं. So when you take a look at the overall positioning in where the current Nifty is standing, Nifty currently is well below important supply zones, which is your TS and KS line. Immediate levels के तौर पे TS and KS lines के नीचे बंद दे रहा है, तो which is an indication that yes, though we are having a positive outlook, the market still needs some work to do. So what is that some work? Let's go and find out. So when you go here and when you take a look at what is the current situation in Nifty. So current situation in Nifty is that it is reviving from lower levels, but multi-day or positional का जो overall indication है, it is still on the negative side. यानी scores are negative. There is mild bullish score. So मैं मानकर चल रहा हूँ कि निफ्टी में थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, but it will try to go up, but then it will need more injection, and the injection can emerge from the leading private bank results. और अगर ये जुड़ जाए, okay, if all these private banks results they start coming in, then it will be a very good relief to the market, and it will provide some momentum to the Nifty. And when you go and take a look at the kind of levels, इसके लिए हम सब जुड़े हैं यहाँ पे to find out कि इंट्राडे के तौर पे एक्टिविटी कैसे करें. Now the entire cluster is emerging in the region of 17,900. You can see here that 18,100. 18,100 is an important zone. All right. And on the lower side, you have got another cluster. So as we start the week, you have got another cluster here, which is okay, let me correct this cluster. We have got even better cluster here at 17,800, right? So इसके बारे में आपसे कहते आ रहा हूँ मैं 17,800 का वहां पर एक बढ़िया सा क्लस्टर बन गया है. ऊपर की तरफ 18,100 का क्लस्टर बन गया है. तो ये दोनों लेवल्स जो है हमें ट्रैक करने पड़ेंगे इनटू द कमिंग वीक. तो आपका सप्लाई जोन और डिमांड जोन तो तय हो गया. तो अभी आपको सिर्फ यही करना है कि इस लेवल पर आए और इस लेवल के आगे चलने लगे. So then the doors open up to a much better prospect. और वो लेवल होगा आपका अराउंड 18,350. सो 18,350 पे आप देखिए कि 18,350 पे हमारा आता है सेकेंड लेवल ऑफ supply zone. So 18,150 के आगे 18,350. So then a very big door opens up, and that could be a very exciting prospect as we head into the next week. So these are the levels to track for.
note it down and ensure that you are able to track them so that we can participate in the market with these levels. So ये थे Nifty के levels. Now let's go and take a look at Bank Nifty. Yes, बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी हैज बीन कंसिस्टेंटली शोइंग सम पॉजिटिविटी 42,000 से हमेशा एक दिलासा दे रहा है हमें. बट देन बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह इट इज ट्रेडिंग बिलो द इंपॉर्टेंट इचिमोकू रेजिस्टेंट बैंड्स ऑफ द शॉर्ट टर्म. टीएस और केएस के नीचे चल रहा है फिलहाल. सो विच इज एन इंडिकेशन दैट बैंक निफ्टी में रैली होगी तो उसे काम जरूर करना पड़ेगा, बिल्कुल हमारी तरह. तो यहाँ पर देखिए कि कैंडलस्टिक स्कोर जो है यही कह रहा है कि थोड़ी बुलिशनेस है. यस, इट इज मच मोर बुलिश. Ichimoku is also saying the bullishness is there. So I would put my money on the table for Bank Nifty. I told you that yesterday also. Again, I'm saying that I will put my money on the table for Bank Nifty because there are some long signals being indicated, right? There are some long signals being indicated. क्योंकि ये एक अच्छा इस हफ्ते के लिए हमें अच्छी खासी cluster मिल रही है. You can see here is a very good cluster emerging at around 42,250. So 42,200 से 300 would be an important cluster zone. और अगर ये लेवल क्रॉस कर जाए, okay, ये लेवल क्रॉस कर जाए, then you have got higher levels available for you, which takes you into 42,800 zone. So 42,800 to 900. Okay, 42,800 to 900 would be your important levels to watch out for. इसे जरूर ध्यान पर रखिए. ये आपका R3 इंट्राडे और R2 मल्टी डे का एक अच्छा खासा सपोर्ट हो गया है. और आप देखेंगे कि 42,900 is also the pivot for the month. So all this gives you very good idea कि चलो ये लेवल्स मिल रहे हैं. और इस वीडियो को देखते हुए आपका अंदाजा जो है मार्केट देखने का जरूर बदल जाएगा, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ मेरे लेवल्स के ऊपर. और जिस प्रकार लेवल्स प्ले आउट हुए, यू कैन गो एंड चेक आउट प्रीवियस वीडियोस. The market has moved along those levels. I am just taking the market reading, taking help of Neo Trader, and showing you how you can make money from the market in a very simple and effective manner. Right? That's what we have been doing, and I'm sure that if you continue to watch my video, you'll become a more informed and proactive trader, right? That's what we want. We want to be a proactive trader, and I'll show you how to do that. And again, coming back to the support zone, yes, I've been speaking about 42,000. I've been shouting from the rooftop. 42,000 एक important zone होगा. 42,000, 41,900 to 42,000. So again, 41,900 is another cluster zone here. So basically 41,900 to 42,000 would be a very good demand zone. और ऊपर की तरफ आपका immediate resistance zone होगा at 42,500, which is your R1. Okay. और आप देख रहे थे वो supply point. So we need all of these levels. We need to put down these levels. We need to know what each level is doing, how we have to act when each of these levels happen. Now, as far as the trading action is concerned, I would always recommend, okay, I would always recommend wait for the first 15 minutes at least if you are a very aggressive trader. But if you want to get more clarity, then definitely wait for the first 30 minutes because it will help you to look at the market in a much better manner. I hope you got a lot of insights on how the market is positioned and what is plaguing the market, how are the levels to be actioned, so that when you get inside the market, you'll be able to trade the market much better. This is Radha Venkatraman signing off. If you like what you heard and if you understood what I mentioned, do not forget to leave a like on this video and also subscribe to our channel if you're watching it for the first time. And also comment on what aspect of this video did you like so that I know, yes, you guys are understanding, you guys are interpreting, and you guys are able to trade the market in a much better manner. Thank you so much. Have a good day. I'll catch you again on the daily roundup. Let's see what the market has done for us. Have a good day and safe trading.